Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Visual Concepts, I welcome all of you. Today is the 9th lecture of fluid mechanics, and I'm your instructor, Dr. Fahad Munir Abbasi. As we have been pursuing, at the start of the lecture, I'll give you a brief layout of today's lecture. आज के लेक्चर में सबसे पहले तो जो कि एक रूटीन चल रही है कि we'll see what we have done in the previous lecture. We'll go through some highlights of the previous lecture. पिछले लेक्चर में क्या कुछ पढ़ा, क्या important concepts थे, ज़रा उसको recall करेंगे और then उसकी बेस पे today's lecture will start. फिर उसके बाद आज के लेक्चर में there are physical interpretations of pressure distribution in static fluids. गो के डिटेल में भी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया, लेकिन रफली स्पीकिंग पिछले लेक्चर में चूँकि बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही थी और हम अभी उसी तनाजुर के अंदर ही हैं, एंड वी आर जस्ट मूविंग ऑन विद दैट. So in today's lecture we will see the physical interpretations of pressure distribution in a static fluid. इसके physical मानी क्या है. Mathematical equations तो हमने देख ली किस तरह gradients की फॉर्म के अंदर pressure के distribution को relate किया जाता है with the gravitational forces, और किस तरह balance of forces को discuss किया जाता है between the pressure and the gravitational forces. इन forces के balance को हमने mathematically तो देखा था. फिज़िकली इनकी क्या इंटरप्रिटेशन है या रियल लाइफ के अंदर इसका क्या मानी और मतलब निकलते हैं, विल गो थ्रू एंड दैट इन टुडेज लेक्चर. देन विल डू सम वर्ड प्रॉब्लम्स. कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करेंगे मेकिंग यूज़ ऑफ द बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशंस. उसके बाद टुडे अ कॉन्सेप्ट जो कि सिर्फ आपके नॉलेज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूँकि you should be familiar जब भी आप कोई टर्म सुने फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड, एंड दिस इज़ द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर. गो के शायद अभी तक आपके कोर्स से रिलेटेड और एमफिल और पीएचडी के रिसर्च के लिए शायद इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट आपके लिए ना हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और इतना ज़्यादा से अट्रैक्टिव भी ना हो, लेकिन यू शुड बी फेमिलियर विद दीज कॉन्सेप्ट्स बिकॉज they play a vital role in the say climate changes and the analysis of weather around us. तो ये जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर है ये क्या चीज़ है और किस तरीके से यूटिलाइज होती है और किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है कैलकुलेशंस के अंदर मुख्तलिफ. आज के लेक्चर में हम ये चीज़ें देखेंगे एंड विल आई ट्राई टू मेक यू फेमिलियर विद दीज थिंग्स. As far as the previous lecture is concerned, we went through the different forms of basic hydrostatic equations. आपने देखा होगा, अगर आप याद करें तो हमने किस तरीके से उनको चलाया और different conversions, different forms हासिल की basic hydrostatic equations की, and then उनको analyze किया in different ways. उसके बाद we went through the hydrostatic equation for incompressible fluid, बेसिकली फॉर लिक्विड्स. हमने बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन के अंदर चूँकि डेंसिटी की कंट्रीब्यूशन बहरहाल कंसिडरेबल अमाउंट की है, इसलिए हमने फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स लाइक लिक्विड्स के लिए डेंसिटी को कांस्टेंट लेके इंटीग्रेट किया था. अगर आपको उसको रिकॉल करें प्रीवियस लेक्चर को, तो हमने हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन की एक फॉर्म बनाई थी विच वाज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स. दैन उसको मुख्तलिफ़ तरीके से एनालाइज किया था, और आज के लेक्चर के अंदर अब देखेंगे कि हम उस फॉर्म को यूटिलाइज भी करेंगे इन सम ऑफ आवर वर्ड प्रॉब्लम्स. जहाँ तक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स का ताल्लुक है, तो मैं अगेन यहाँ रिपीट करता चलूँ आप लोगों के लिए कि फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन जो हम डिराइव करते हैं, वी मेक यूज़ ऑफ द फैक्ट दैट डेंसिटी इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम. फ्लूइड के और फ्लो के फ्लूइड डोमेन के फ्लूइड वॉल्यूम के तमाम पॉइंट्स के ऊपर डेंसिटी कांस्टेंट होती है, और यही चीज़ यही फैक्ट हमें अलाउ करता है कि हम बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लें और उसका सोल्यूशन ऑब्टेन कर सकें इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड हाइट. नाउ उसके पैरेलल यही जो इक्वेशन हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए ऑब्टेन की थी, दिस विल बी ट्रू एंड विल यूज़ दिस in order to determine the pressure difference between different points
of a static liquid. Static liquid के लिए, चूँकि liquids are incompressible fluids, तो हम static liquids के लिए हम इसको use करेंगे to determine pressure at different points within a static fluid. Then going through the Torricelli's principle, हमने देखा कि कैसे pressure head, elevation head और piezometric head relate होते हैं और उनको कैसे relate किया जाता है, which was also a result of the basic hydrostatic equation. And lastly, we studied about the hydrostatic equation for compressible fluids, now which were mostly for gases. जो हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए, वहाँ तो हमने डेंसिटी को कांस्टेंट लेके सिंपल इंटीग्रेशन करके तो एक सॉल्यूशन उसका ऑब्टेन कर लिया था, एक जनरल एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लिया था, एंड वी फिगर्ड इट आउट कि इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हम प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द फ्लूइड वॉल्यूम डिटरमिन कर सकते हैं कहीं पे भी. बट दैट वाज फॉर द केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड्स. बट एज फार एज द केस ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड्स या गैसेस इज कंसर्न, वहाँ पे चूँकि डेंसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, सो हम इतनी आसानी से अपनी हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते. उसके लिए ज़रूरी क्या कि हम इक्वेशन ऑफ स्टेट जो कि हमने यूटिलाइज की थी उसको यूज़ करते हुए आगे बढ़ें, विच वॉज P वॉज इक्वल टू रो आर टी. आज फिर उसको किसी न किसी तरीके से देखेंगे. तो उस इक्वेशन ऑफ स्टेट को यूज़ करते हुए हमने हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड्स को डिटरमिन किया था, और हमने देखा था कि जब तक हम डेंसिटी को कन्वर्ट नहीं कर लेते हैं एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर, तब तक हम हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते फॉर द केस ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड्स. सो आज यही जो कॉन्सेप्ट्स प्रीवियस लेक्चर के थे इनको यूज़ करते हुए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे इसी लेक्चर के अंदर. बट उससे पहले लेट्स गो थ्रू सम डेफिनेशंस फर्दर. जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूटिलाइजेशन भी होगी, कुछ थोड़ा बहुत आप फेमिलियर इस कॉन्सेप्ट से स्पेसिफिक ग्रेविटी से पहले भी हैं जब हमने एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे, और मैंने रफली आपको बताया था. बट आज थोड़ा सा डिटेल्स इसको देखेंगे व्हाट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़. Now, specific gravity is denoted by Sg and is the ratio of a fluid density to a standard reference fluid. Water for the case of liquids and air for the case of gases. And now, specific gravity basically ratio है of the density of a particular fluid. जिस भी तरह का fluid आप consider कर रहे हैं तो उसकी ratio है with the reference fluid. जब आप किसी fluid को से compare करते हैं उसकी density, उनके ratio को specific gravity कहा जाता है. अगर the fluid which you are considering is liquid, then we use water as the reference fluid. And if the fluid being considered is gas, then we use air as a reference fluid. Now, specific gravity of gases is given here. If you want to take a look at this, this is the specific gravity for gases. You just simply replace the density of gas here and take the ratio of it with the density of air, and then density of liquid to the density of water. This is the case where the fluid under consideration is liquid, and density of air obviously is given as 1.205 kilogram per meter cube, and density of water is given as 998 kilogram per meter cube. कुछ बुक्स के अंदर आपको और कुछ ऑथर्स ने ज़रूर डेंसिटी ऑफ वाटर को 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी लिखा है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इन कैलकुलेशंस, लेकिन ये इतना थोड़ा सा डिफरेंस वहाँ पे चल जाता है उन केसेस के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी हमें रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड नहीं होती. तो हम 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को भी अपनी कैलकुलेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी ना चाहिए हो. ओनली देन वी कैन यूज़ दिस वैल्यू. अगर ज़्यादा एक्यूरेसी डिमांडेड है देन विल गो फॉर द प्रिसाइज्ड वैल्यू व्हिच इज़ 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. Now, recall from the previous lecture that the hydrostatic pressure in liquids for z-axis pointed upward is given by del P plus rho G equal to 0. This is in most simple form of the hydrostatic equation which we derived in the
previous lectures and analyzed in the previous lecture. This is the vector form of this equation. अगर आप इसको स्केलर फॉर्म के अंदर, कंपोनेंट फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो इसकी ये तीन फॉर्म्स बनेंगी, द x, द y एंड द z कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन. यहाँ पे श्योरली अगर ग्रेविटी इज अ फंक्शन ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स x in the z direction only, or it only acts in the vertical direction, then the x and y components of the density of the gravity will vanish. जब वो vanish हो जाएंगे तो simply the pressure will not remain to be a function of x and y. If we simply name rho and g as gamma, then we can write the basic hydrostatic equation as difference of p minus p naught equal to minus rho z. ये भी एक फॉर्म है जो बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन की आपने देखी है एंड हमने इसको भी डिटेल से देखा था इन द प्रीवियस लेक्चर्स. यहाँ पे द क्वांटिटी गैमा इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड विच हैज द डायमेंशन ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम. इस गैमा को लास्ट टाइम तो हमने देखा और हमने इसको मैथमेटिकल क्वांटिटी के लिहाज से एनालाइज भी कर दिया, और जब हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स का केस डिस्कस कर रहे थे तो सिंपली इसको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया था ड्यूरिंग आवर इंटीग्रेशन. बट फिजिकली दिस गैमा is named as specific weight of the fluid. आपने specific gravity तो previous slide के अंदर हमने देखा कि क्या चीज़ है. The specific weight of the fluid and it has the dimension of weight per unit volume. कुछ values इसकी मुख्तलिफ fluids के लिए gamma की क्या क्या values हो सकती हैं. These are given in table 1. In this table I have put a value of gamma for air, ethyl alcohol, SAE30, oil, water, seawater, glycerine, carbon tetrachloride and mercury for you. दो मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर स्पेसिफिक वेट की वैल्यू गिवन है एट 68 फ़ारेनहाइट और 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड वी कैन यूज़ दीज वैल्यूज़ इन डिफरेंट कंप्यूटेशंस. एक दो तो हम आज की वर्ड प्रॉब्लम के अंदर भी यहाँ से फ्लूइड्स की वैल्यूज़ यूज़ करते हुए एनालाइज करेंगे. दीज आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ जो कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिटरमिन की गई हैं इन द लेबॉर्ट्री, नॉट थियोरेटिकली, एंड देन थियोरेटिकली वेरीफाइड बाय द इक्वेशंस लाइक द हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन. Now physical interpretation of the mathematical equations of pressure distribution. सादा अल्फाज के अंदर अगर आप हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन को रियल लाइफ के अंदर एनालाइज करना चाहें और उसको एक्सप्लेन करना चाहें या समझना चाहें कि इसकी क्या फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है या रियल लाइफ के अंदर इसका क्या मतलब और मानी निकलता है, देन वी कैन सिंपली से दैट प्रेशर इज अ continuously distributed uniform pressure in a continuously distributed uniform static fluid varies only with vertical distance and is independent of the shape of the container. The pressure is same at all points on a given horizontal plane in the fluid. Pressure increases with depth in the fluid. देखें ये तीन चार चीज़ें हैं जो ये हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन हमें बताएगी. टेक फॉर इंस्टेंस द फिगर विच इज़ गिवन इन दिस स्लाइड एंड इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. पहली चीज़ जो हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन से हमें पता चलती है एंड दैट इज़ द प्रेशर इज़ continuously distributed throughout the fluid volume. फ्लूइड में जो प्रेशर जो कॉन्टिन्यूम फ्लूइड है तो प्रेशर उसके तमाम पॉइंट्स के ऊपर एक्ट ज़रूर करेगा बट इन द वर्टिकल डायरेक्शन ओनली. तमाम पॉइंट्स के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के राउंड अबाउट प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी बट अगर आप वर्टिकली मूव करते हैं तो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर की डिफरेंट वैल्यूज़ अकर करेंगी. अगर इस फिगर को आप देखें तो इसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले के ऊपर तो फ्री सरफेस है जहाँ पे देर इज़ द इंटरफेस बिटवीन द लिक्विड एंड द एयर इन द विसिनिटी. एंड दूसरा पॉइंट जो हमने कंसिडर किया दैट इज़ डेप्थ 1. उसका डेप्थ 1 का नाम दिया और इस सेम डेप्थ के ऊपर चार मुख्तलिफ पॉइंट्स कंसिडर किए हैं जिनमें A, B और C का नाम दिया गया. दूसरी
जो डेप्थ इस फ्लूइड के अंदर हमने कंसिडर की है उसको हमने सॉरी उसको हमने डेप्थ 2 का नाम दिया और इसको हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किया A, B, C एंड D। अच्छा, A, B और C से D डिफरेंट ऐसे है कि इस लास्ट के पोर्शन के अंदर हमने कुछ मरकरी को फिल कर दिया and which is obviously a different fluid than water which is contained throughout the container. Now अगर सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो दिस इज दैट A, B, C एंड D ये तमाम पॉइंट्स को कि डिफरेंट तरह की ज्योमेट्री के अंदर हैं लेकिन सेम डेप्थ के ऊपर हैं, तो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी अकॉर्डिंग टू द बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन। प्रेशर की वैल्यू इन तमाम पॉइंट्स पे एक ही होगी बिकॉज प्रेशर only changes in the vertical directions but not in the horizontal direction. Pressure is not a function of say x or y, it's only a function of z which is the vertical coordinate. So horizontal plane के ऊपर कहीं भी आप किसी भी तरह मूव कर लें तो प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। सो लोअर केस लेटर्स जो A, B, C एंड D आपको नज़र आ रहे हैं इन तमाम पे प्रेशर की वैल्यू सेम होगी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट इनकी शेप और ज्योमेट्री मुख्तलिफ है एक दूसरे से। उसके पैरेलल अब अगर डेप्थ 1 और 2 को एनालाइज करें तो ज्योमेट्री एक तरह की है लेकिन डेप्थ में फ़र्क है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वर्टिकल डिस्टेंस एंड विच इज़ DZ, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दिस Z एट दीज 2 पॉइंट्स एट डेप्थ 1 एंड डेप्थ 2। सो द प्रेशर वैल्यू ऑफ प्रेशर विल डिफर from A, capital A to the say small a. So depth 1 और depth 2 के दरमियान प्रेशर की वैल्यूज चेंज होंगी and they will keep on changing as we change our height or depth. आखिरी पोर्शन को अगर आप देखें डिटेल से तो जहाँ पे हमने मरकरी फिलअप की है तो यहाँ पे गो के डेप्थ डिफरेंट है, ओके दैट इज़ 1 पॉइंट 1 वे जिसकी वजह से प्रेशर यहाँ फ़र्क होगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि फ्लूइड की नेचर बदल गई है, फ्लूइड की टाइप बदल गई है। जो कि डेप्थ 1 के ऊपर फ्लूइड अकर कर रहा है दैट इज़ वाटर और जो डेप्थ 2 के ऊपर या उसके बॉटम है दैट इज़ मरकरी। सो चूँकि फ्लूइड की टाइप बदल गई है सो डेंसिटी भी डिफरेंट हो गई है, वाटर की और डेंसिटी है, मरकरी की और डेंसिटी है, दीज आर डिफरेंट। सो in simple words यहाँ पे pressure will be different at 2 points not only because of the height but also because nature of the fluid is different at both locations. So जब भी हम vertical direction के अंदर move करेंगे pressure will change from one point to another as we will change the depth and also pressure value of the pressure will be different when the nature of the fluid or the type of the fluid is changed. Now let's start using के हम कैसे इन हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन के को यूज़ करते हुए डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं और डिफरेंट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड चीज़ों को दोबारा रीवेरीफाई करते हैं या थ्योरेटिकली चीज़ों को एनालाइज करके फिर उनको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं। We'll start with a very simple problem. It states that Newfound Lake, एक लेक का नाम है, a freshwater lake near Bristol, New Hampshire, has a maximum depth of 60 meters and the mean atmospheric pressure is 91 kilopascals. Estimate the absolute pressure in kilopascal at this maximum depth. We have to calculate the we have to estimate the absolute pressure in kilopascals at this maximum depth which is 60 meter. अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं। आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को यहाँ से खासकर बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन के तनाजुर के अंदर सॉल्व करने से पहले 1-2 चीज़ें एनालाइज कर लें और देख लें कि क्या। सबसे पहली चीज़ कि विच टाइप ऑफ फ्लूइड इज़ बीइंग यूज्ड, किस तरह के फ्लूइड से आपको डील करना पड़ रहा है और देन विल मूव ऑन, हम शॉर्टलिस्ट करते जाएंगे और कैटेगराइज करते जाएंगे कि हमने इसको कैलकुलेट करना कैसे। So since this is a lake, a fresh water lake, so this is water and a incompressible fluid which we are dealing here.
basically चूँकि at rest है and we have to estimate the pressure distribution within the fluid, so we'll use the form of the hydrostatic equation which deals with the incompressible fluids और उसकी different heights के ऊपर हमें pressure की distribution बताती है. सबसे पहले हमने देखा कि it deals with the water and which is an incompressible fluid, so we'll use the basic hydrostatic equations for incompressible fluids in order to solve this problem. Okay, now let's solve this and we go through it. Solution of the equation. सबसे पहले अगर recall करें तो hydrostatic equation for the compressible fluids उसकी क्या form थी? We'll see that. Minus gamma dz. You are familiar with this form of the hydrostatic equation, which is for the compressible, for the incompressible fluids, where gamma is specific weight all of us are familiar with this, जो कि पिछली स्लाइड के अंदर हमने इसको देखा और एनालाइज किया और इसको स्टडी किया कि व्हाट इज गैमा. नाउ अगर आप इस सबसे पहले इस गैमा की वैल्यू हम देखना चाहें तो this is the value of gamma and we are dealing with water. Here it is at fourth row and its specific weight is 62.4 in pounds per feet cube and Newton per meter cube. में इसकी वैल्यू 9790 यूनिट्स है. सो चूँकि हम जो एनालिसिस है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर के अंदर, न्यूटन और मीटर के अंदर कैरी आउट करेंगे, सो यूज़ द वैल्यू 9790 फॉर आर दिस प्रॉब्लम. इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके हमने जो बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन की दूसरी फॉर्म ऑब्टेन की थी, अगर आप उसको रिकॉल करें तो इट वाज सिंपली से this was the form of a hydrostatic equation which we obtained integrating this equation, this hydrostatic equation, जहाँ पे प्रेशर को हमने इंटीग्रेट किया था बिटवीन टू पॉइंट्स जिनकी लोकेशन Z1 और Z0 हमने की थी. और अगर हम रेफरेंस लेवल जो है वो सरफेस पे ले रहे हैं एंड वी आर टेकिंग दैट इक्वल टू 0, देन वी ओनली गेट अ Z here, or you can also write it in the manner that this is equal to P0 plus gamma H, where H is the height or the difference in the altitude of the 2 points. This H denotes the difference between the height of the 2 points, and this P1 is pressure at one point and P0 is the pressure at the other point. So इसको इस relationship को use करते हुए we'll solve this equation, and P0 obviously which is given here
you can see that, and the mean atmospheric pressure in the statement of the problem, that the mean atmospheric pressure is 91 kilopascal. This is the value of P naught. Now substitute the values of P naught, gamma and H in static. तमाम जो नोन वैल्यूज़ हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर लें. गैमा की वैल्यू आपने देखी, हमने लिखा 9790 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड P naught is equal to 91 kilopascals. H is equal to, say, 60 meter. Then our pressure becomes 91 किलो न्यूटन्स. हमने पास्कल को न्यूटन्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया क्योंकि जो हमने स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट किया दैट इज आल्सो इनटू द फॉर्म ऑफ न्यूटन पर मीटर क्यूब. In fact, ये जो वैल्यू है of specific weight, we have used this value in Newton per meter cube. But अगर आप इसको पाउंड पर फीट क्यूब के अंदर भी कैलकुलेट करना चाहते हैं then आप 62.4 इसकी वैल्यू यूज़ कर लेंगे. But then we have to convert the value of pressure which is given to us into pound per feet also in order to maintain the consistency. So this is the value of pressure P naught, and further into 60 meter, which this is Newton per meter cube, and this is 60 meter is the height which we computed. अब एक और चीज़ यहाँ ऑब्जर्व करें, बिकॉज दिस वैल्यू ऑफ प्रेशर इज इन किलो न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर, एंड हेयर वी हैव यूज्ड न्यूटन इनटू मीटर ओवर मीटर क्यूब. So there are two options, either convert this value into Newton per meter square or convert this one into kilo newtons per meter cube. So we choose to convert this quantity into kilo newtons per meter cube, and for that we simply use that 1 kilonewton over Newton. सिंपली ताकि इनको हम किलो न्यूटन्स के अंदर इस पूरी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकें. और इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंपली गेट which is equal to 678 kilopascals. Now this is the pressure that we have computed, and further एक और चीज़ अगर आप इसको इक्वेशन की प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की दोबारा पढ़ें, that we have to calculate the absolute pressure, and also ये तो हमने प्रेशर तो कैलकुलेट कर लिया एब्सोल्यूट प्रेशर. नाउ विल गो फॉर द अगर हम प्रेशर को जो कि हमने दो टाइप्स के पढ़े थे
कि गॉज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर. सो अगर हम प्रेशर को इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन रेफरेंस ऑफ सरफेस प्रेशर देखना चाहते हैं, सो दो प्रेशर्स को कंपेयर करना चाहते हैं कि व्हाट इज द प्रेशर एट द डेप्थ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द pressure at the surface of the lake, then we can compare these two by simply say P minus P absolute, which is 678 minus 91. So this is the value of gauge pressure, which is say a comparison or a comparison of pressures between the two altitudes here. This was how we solved and computed the pressure at different locations in a lake. So ऐसे ही अगर मुख्तलिफ फ्लूइड बॉडीज़ के अंदर या लेक्स के अंदर या पाउंड्स के अंदर आपको प्रेशर कैलकुलेट करने का कहा जाए, तो इसी फॉर्म के अंदर यू विल सिंपली यूज दिस फॉर्म ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन व्हिच इज वैलिड फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, एंड ऑब्वियसली इट कैन बी वाटर और इट कैन बी एनी अदर लिक्विड sort of a thing which is incompressible, and then you can use the value of specific weight or the pressure which is known, which should be known at any point, and the difference in height between two locations. और फिर इसी क्वेश्चन को यूज़ करते हुए आप न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं प्रेशर की एट अ गिवन पॉइंट. एक और एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और उससे पहले उसकी स्टेटमेंट देखते हैं, which reads that because of a leak in a buried gasoline storage tank. अगर आप पेट्रोल पंप्स वगैरह पे गए हों तो वहाँ पे इस किस्म के टैंक्स होते हैं जिनके अंदर पेट्रोल एंड डीजल वगैरह स्टोर किया जाता है, एंड देन they just move it out. So this is a problem, real engineering problem, and we'll see case mein what we have to do. Because of a leak in a buried gasoline storage tank, water has seeped into the depth shown in figure. If the specific gravity of the gasoline is 0.68, determine the pressure at the gasoline water interface and at the bottom of the tank. Express the pressure in units of pound per feet square and pound per inch square, and as pressure head in feet of water. एक गैसोलीन टैंक है जी, जिसके अंदर कुछ सीपेज की वजह से वाटर लेवल कुछ राइज हो गया, और अब there is an interface sort of a thing. अगर आप इस फिगर को देखें तो there is an interface sort of a thing between the gasoline which is in the upper part of the tank here and the water which is seeped from the bottom of the tank, and here it is its level. इन दो levels को हमने 1 and 2 का नाम दिया, और according to the figure the height of these two say interfaces or levels from the opening is 17 foot for the gasoline water interface and 3 foot from the gasoline water interface to the bottom of the water. कुछ चीज़ें जो यहाँ हमें given है, the first one is the specific gravity of gasoline which is 0.68 units, and what we have to find out, we have to express the pressure in units of pound per feet square and pound per inch square, and as pressure head in feet of water. So तीन चीज़ें हैं. सबसे पहले we have to determine pressure in pound per feet square, and then we have to calculate the pressure in pound per inch square, and then we have to calculate pressure head in feet of the water. At the bottom of the tank we have to calculate the pressure head. So we'll start, and we'll again simply start with the basic hydrostatic equation for incompressible fluid, because देखें gasoline which is also in the liquefied form, it is a liquid, and water, it is also a liquid. So we'll go for the hydrostatic equation for
incompressible fluids. And hydrostatic क्यों? Because both of the fluids are at rest, they are not moving. So for rest incompressible fluids which are at rest, we use the basic hydrostatic equation in order to calculate the pressure at different points. We'll start with the equation which we have already used in the previous example. It reads that again, this is the pressure at one point and this is the pressure at the other point, and these 2 points are separated by a distance h, and gamma here is the specific weight. Now, as it is given, और अगर simply आप इसको convert करना चाहें और simply इसको write up करें, तो we can simply that specific gravity of say gasoline specific gravity of gasoline, then gamma of H2O, specific weight of H2O into H plus P naught. देखें, एक चीज़ ज़रूर है कि आप ज़रा इसको अगर डिटेल से देखें और थोड़ा सा गौर से सोचें कि क्यों स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैसोलीन मैंने यूज़ की जबकि स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर लिया. एक यहाँ पे हिंट थोड़ा सा आपको देता चलूँ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन यहाँ यूज़ करके विच इज़ द रेशो विद द डेंसिटी ऑफ वाटर, सो उसको आप यूज़ करेंगे तो यू विल कम टू नो कि ये कैसे हुआ. ज़रा जब इसको खुद सॉल्व करें विल कम टू से, और अगर फिर भी ना क्लियर हो सके तो यूज़ डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन को यूज़ करें विच विल H2O चलें. I also tell you, और यहाँ पे चूँकि डेंसिटी ऑफ गैसोलीन आएगी, and simply go for, and this gamma is rho g. G will remain the same and rho will be different for gasoline and water, and जब इन दो रिलेशंस को यूज़ करेंगे तो you will get this simply कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने कैसे इनकॉर्पोरेट की गैमा के साथ, जबकि यहाँ तो सिर्फ गैमा एग्जिस्ट कर रहा था. Now just simple computation, we can simply say that this is a side. Don't confuse, don't mix these two things. This is a side. I hope you are able to figure it out कि हमने ये कैसे कैलकुलेट किया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू गैमा ऑफ H2O, बिकॉज ये गैसोलीन पोर्शन के लिए है तो हमने किस तरीके से किया. सिंपली अगर आप ये गैमा ऑफ फॉर गैसोलीन को आप सिंपली multiplying and dividing by density of H2O, so we'll simply that gamma is equal to rho g rho H2O into rho this is the specific gravity of gasoline and gamma of H2O. Just in case जी go के I just wanted कि आप इसको खुद देखें, लेकिन इन केस कि यू आर वरीड अबाउट कि कैसे इसको वो किया गया तो आई सॉल्व इट हियर फॉर यू. इस तरह की छोटी मोटी टास्क्स करें, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू इफ़ यू स्टार्ट डूइंग देम. सिंपली अब इनकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ पुट करें एंड कंप्यूट द प्रेशर. Gamma for water we'll use in because we have to calculate it here in the pound per feet square, so we'll use the pound per feet square from table 1 which read 62.4, and since this height was for mercury, this height is 17 feet from the opening or from the
reference into 17 feet plus P naught because we don't know what P naught is, and this is in pound per feet square, or in simple words 721 plus P naught pound per feet square. This is the pressure. Now, if we come to know what this P naught is, then we can determine the complete pressure at the interface. Interface जिस जगह के ऊपर water and gasoline meet up कर रहे हैं, which is say at 17 feet from the top of the container. वहाँ से 17 फीट के फासले के ऊपर हमने ये तो कैलकुलेट कर दिया, बाकी तमाम क्वांटिटीज़ हमें नोन है, बट सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट दिस P naught so that we can completely determine the pressure at the interface. So what to do about this pressure? If relative pressure हम मेजर कर रहे हैं relative to atmospheric pressure. Atmospheric pressure से हम इसको कंपेयर करें, which is obviously opening के ऊपर, इस कंटेनर की ओपनिंग के ऊपर और बाहर सारा जो एटमॉस्फेयर है उससे हम कंपेयर करके रेफरेंस प्रेशर या relative pressure हम कंप्यूट करें, तो we can simply say that हम P naught को 0 कंसिडर कर देते हैं. Then we have P1 is equal to, if this P naught is equal to 0, then we have P1 is equal to 721 pound per feet. Okay, we'll go for it. थोड़ा सा खूबसूरती से लिख के, this is खैर काफ़ी खूबसूरत था. This is the value of pressure in pound per feet square. अब एक और चीज़ थी जो कैलकुलेट करने इस प्रॉब्लम के लिहाज से ज़रूरी है, which is we had to calculate this pressure in pound per inches square. Then we can simply write P1 is equal to 721 or 144 inches का square. 144 क्यों जी? Because 1 foot is equal to 12 inches and foot square is 12 into 12. So simply 721 over 144, and you can compute its answer by this. और लास्ट एक मज़ीद चीज़ जो हमने कैलकुलेट करनी है इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के मुताबिक, दिस इज़ प्रेशर हेड इन द फीट ऑफ वाटर. यू रिमेंबर हमने प्रेशर हेड किस चीज़ को कहा था और हमने किस चीज़ को प्रेशर हेड का नाम दिया था? प्रेशर हेड जब हमने पर्टिकुलरली जिस वक्त हम टॉरिसेलिस प्रिंसिपल भी कर रहे थे,
और उसको स्टडी कर रहे थे, और उससे पहले भी, तो हमने इन तमाम क्वांटिटीज़ को हेड्स की फॉर्म के अंदर, प्रेशर, एलिवेशन हेड, एपिजियोमेट्रिक हेड और ये सारी चीज़ें. सो वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर हेड विच वाज ऑब्वियसली, अगर यू शुड बी नोइंग दैट. तीसरी चीज़ जो हमने यहाँ कैलकुलेट करनी है, विच इज़, अगर आप प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को गो थ्रू करें, दिस इज द प्रेशर हेड इन फीट ऑफ वाटर, यानी पानी के बॉटम के अंदर और इस टैंक के बॉटम के ऊपर जो हमने प्रेशर हेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो विल गो फॉर दैट हेयर. रिमेंबर जब हमने डिफरेंट कैलकुलेशंस की थी हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन से रिलेटेड, तो वी कैलकुलेटेड डिफरेंट क्वांटिटीज इन द फॉर्म ऑफ हेड्स. तो प्रेशर हेड, व्हाट वाज प्रेशर हेड? Okay, that was equal to pressure by gamma of H2O, and this is 721 over 62.4. This is pound per feet square, this is pound per feet cube, and it comes out to be 11.6 feet. So this is the value of say 11.6 foot. This is the value of pressure head, but we have to calculate the pressure head at the bottom of the container. हमने container के bottom के ऊपर pressure head की value calculate करनी है. So we use the relation, the other relation. इससे पहले reference level was at the top of the container. Now the reference level is between, okay, see the figure closely. इससे पहले जब हम गैसोलीन के पोर्शन को ट्रीट कर रहे थे और जहां हमने प्रेशर एट द इंटरफेस कैलकुलेट किया, वहाँ वी यूज्ड पी नॉट एज द रेफरेंस लेवल विच वाज द ओपनिंग ऑफ द कंटेनर, एंड वी स्टार्टेड डिस्टेंस एंड कंप्यूटेड इट फ्रॉम हेयर टू द interference level of the gasoline and water. But now since we have to calculate the pressure head at the bottom of the container, so we'll use this distance which is equal to 3 foot, and the reference heights will be, say, at 1 and 2 respectively. Now as P2 gamma H plus P1. P2 lies at the bottom of the container. P1 is the pressure at the interface, and gamma and H, you are familiar with this. Gamma for water is, चूँकि second जो distribution है at the bottom, उसमें तमाम water ही है, इसलिए we'll use the gamma for water, which is 62.4, and height obviously is 3 feet plus P1. What is P1? We have computed it right now for the interface between the gasoline and water, which came out to be 721 pounds per feet square, and this comes out to be equal to 908.2 pound per feet square. Do check the calculations and computations के what is कि जो कुछ मैंने compute या calculate किया है ठीक भी है, इसके अंदर कोई plus minus हो सकता है. Now this is the value of pressure at the bottom of the container. आपने pressure तो determine कर लिया at the bottom of the container, but how we will move and how we'll find out what is the pressure head at the bottom of the container, and obviously this pressure is in pound per feet square. This is a pound per feet square, but if you want to convert it in 908, and the procedure is the same, अगर आप इसको convert करना चाहते हैं, now this is in pound per square inches. So you just divide it by 144 and you get the answer and do the computation आपको जैसे वो बेहतर और मुनासिब लगे. और pressure head at the bottom of the container, you have to compute that, then simply
pressure head is equal to P2 over gamma H2O. Okay, we have to calculate the pressure head, and pressure head has a value of P2 over gamma of H2O, and P2 here came out to be 908.2, and gamma of H2O obviously is 62.4, जो कि हमने table 1 से देखा, and here it is value of gamma, and you can simply compute and get the answer for it, which hopefully will be equal to 14.6. But do check it कि आया ये calculation और computations ठीक भी हैं कि नहीं. So this is how we solve this problem of the seepage in a container. और हमने seepage in a container को solve किया, and we solved that for different levels of pressure at two different points. One was at the interface and second one as at the bottom of the container. There is another problem. एक मज़ीद problem को थोड़ा सा देखेंगे और detail से इसको analyze करेंगे. Statement of the problem says that Empire State Building in New York City, one of the tallest buildings in the world, rises to a height of approximately 1250 feet. Estimate the ratio of pressure at the top of the building to the pressure at its base, assuming the air to be at a common temperature of 59 degree Fahrenheit. Compare this result with that obtained by assuming the air to be incompressible with gamma equal to 0.0765 pound per feet cube at 14.7 pound per inch square. Value of air at standard conditions. Now एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप और बॉटम के ऊपर हमने प्रेशर को देखना और एनालाइज करना है. बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है, और ये भी हमें बताया गया है कि टेम्परेचर जो ऑफ एयर है वो कॉमन है, विच इज़ 59 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब देखें इस प्रॉब्लम के स्टार्ट से इससे पहले तो हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स डील करते रहे. अगर इस प्रॉब्लम को देखें तो वी आर डीलिंग विद एयर विच इज़ अ फॉर्म ऑफ अ कंप्रेसिबल फ्लूइड. सो हमने चूंकि प्रेशर कैलकुलेट करना है, एंड एयर एज्यूमिंग दैट एयर इज एट रेस्ट, सो we will use the basic hydrostatic equation for compressible fluids here. सबसे पहले इसको कंप्यूट करने के लिए, ठीक है, वेयर ऑब्वियसली बिल्डिंग के टॉप के ऊपर जो प्रेशर है वो कैलकुलेट करना है और उसकी रेशियो कैलकुलेट करनी है विद द pressure at the bottom of the fluid, and then we have to compare this result with that obtained by assuming the air to be incompressible. अगर हम एयर को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ट्रीट करें तो फिर दोनों वैल्यूज़ के अंदर, फर्स्ट केस के अंदर और सेकंड के अंदर क्या डिफरेंस आता है हम उसको देखेंगे डिटेल से. एक चीज़ ज़रूर और बताता चलूँ कि इस प्रिसाइज एग्जांपल को थोड़ा सा गौर से ज़रूर देखें, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड से रिलेटेड तो हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन को यूज़ करने की दो एग्जांपल्स हमने देख ली. कंप्रेसिबल को ये डील करने की हमारा पहला केस है, एंड आप देखेंगे कि किस तरह हम इक्वेशन ऑफ स्टेट को भी यूज़ करते हैं in this computation, and we'll solve that. So let's start. Let's go for the solution of this equation. We simply know that dP by dz is equal to minus rho g. In very simple words, कि हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन की इस फॉर्म से तो आप ज़रूर फेमिलियर होंगे. नेम दिस एज इक्वेशन. तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या चीज़ है? Equation of state relates the pressure, the density, and the temperature. The R, this R is the universal gas constant, and it has different values for gases.
Now simply use this density into equation 1. हम ये कर क्यों रहे हैं, ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा. देखें, मैं अगेन इसको एक्सप्लेन करता चलूँ, एंड कीप दिस थिंग इन माइंड that why we are doing this. In very simple manner, this rho is density and we are dealing with the compressible fluids. क्यों हमारे लिए सिर्फ ये हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन काफ़ी नहीं है यहाँ पर? Because this is the density, and since we are dealing with the compressible fluids, so this density is not constant, and it depends upon say pressure and temperature. So we have to express this density in the form of pressure and temperature, making use of the equation of state. And you'll see that using 2 in 1 we get dp by dz equals minus pg over r. Or simply if you separate the variables, now g is constant, r is constant, only this t remains, and in the statement of the problem we are provided the fact that if you read out this line, that assuming the air to be at a common temperature of 59 Fahrenheit, so the temperature remains constant, and we can simply say that T is equal to T naught which is a constant dz. Name it as equation 3. Now you can simply this is a simple separable equation, separate हमने कर ली. Now we can simply go for the integration and obtain the results of this. So we integrate equation 3 here, and we come out with natural log of p at 2 different locations, p naught, p1. और अगर आप इसको मज़ीद देखना चाहते हैं और मज़ीद इसको वो करना चाहते हैं मज़ीद सिंप्लिसिटी के लिए, तो आई विल राइट इट डाउन एट माइनस जी आर टी नॉट जी नॉट जी वन डी जी. And we simply compare it and write it down as minus g by r t naught z minus z naught z1 minus z naught, or in simple manner natural log of p1 by p naught minus, okay, this is there is no minus, exponential of minus g over r t naught c1 minus z naught. So this is how we solve it. अब simply
इन तमाम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करनी एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रेशो P1 और P0. P1 is the pressure at the top of the building and P0 is the pressure at the bottom of the building. So we simply compute it, P1 and P0 exponential of minus G, and we, since these quantities are in feet per second, so हम G की वैल्यू भी feet per seconds के अंदर यूज करेंगे, which is 32.2 feet per second square. Z1 height at the top is 1250 meter minus Z0 at the bottom is 0 meter, and R की value, the gas constant for air is 1716 feet pound per slug into Rankine, which is the unit of temperature. तो जो टेम्परेचर हमें गिवन है T0, हमने इसको भी केल्विन के बजाय रैंकिन में कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, बिकॉज इट इज़ प्रोवाइडेड अस इन द फ़ारेनहाइट एंड विच इज़ 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड वी विल कन्वर्ट इट इन द रैंकिन बाय एडिंग 460 रैंकिन इनटू इट, एंड विद दिस ओके दिस इज़, और सिंपली अगर इस तमाम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई आप करें तो विल गेट 0.956. दिस इज द रेशो ऑफ pressures at the top and at the bottom of the Empire State Building, making use of the fact that here it is compressible compressible फ्लूइड. हमने कंप्रेसिबल फ्लूइड को कंसिडर करते हुए, एयर को एज अ कंप्रेसिबल फ्लूइड ट्रीट करते हुए हमने इसको कैलकुलेट किया, एंड वी वेंट फॉर इट एंड वी सॉ दैट द रेशो केम आउट टू बी 0.956. नाउ दूसरी चीज़, दूसरा पोर्शन क्या था इसका कि जनाब अगर हम इसको कन्वर्ट करें और इसको ट्रीट करें एज अ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो तब हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और फिर हम दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं. यू विल सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी. नाउ अगर एयर को हम बजाय कंप्रेसिबल के इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ट्रीट करें, देन सिंपली गेट P1 विच इज़ द कंडीशन जो कि हम पहले एक दो एग्जांपल्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, वही कंडीशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स हम यहाँ यूज़ करेंगे, माइनस गैमा H, और P1 ओवर P0 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.0765, which is the value of gamma, which is provided in the statement of this problem, into 1250, which is feet, which is height height or h of this building, and over 14.7 pound per inch square. और चूंकि pound per inch square है, this pressure is also provided in the statement of this problem. Since this is in inch square and we have used in feet, so हम इसको भी feet में convert करेंगे by multiplying it with 144, and the result comes out to be P1 P0 is equal to 0.955. So this is the answer when we treat air as a incompressible fluid, and 0.956 was the answer when we treated air as a incompressible fluid. So ये देखा, अभी इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन अगर ये सर्कमस्टांसेस थोड़े चेंज हों, हाइट बदले, तो तब ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता जाएगा, और कैलकुलेशंस के अंदर जो वैल्यूज़ प्रिडिक्ट होंगी मेकिंग यूज़ ऑफ द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, treating air as an incompressible fluid, this will be very different when we treat the fluid or the air as a compressible fluid. So अभी तक के लिए ये कंपैरिजन, लेकिन जब सिचुएशंस फ़र्क होंगी और ये कंडीशंस एक्सट्रीम पे जाएंगी और टेम्परेचर वेरी करेगा, तो तब इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर बहुत फ़र्क पड़ेगा.
Now let's move on. Let's move to the international standard atmosphere. गो के बच्चों को मैं इतनी ज़्यादा, आप लोगों के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, ज़्यादा डिटेल में फिज़िक्स की नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन फिर भी एक लाइट सा ओवरव्यू देना ज़रूरी है. पर्टिकुलरली यू शुड गेट फेमिलियर विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, और सिंपली स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर is an atmospheric model of how the pressure, temperature, density and viscosity of the Earth's atmosphere change over a wide range of altitudes. कैसे pressure, temperature and density और viscosity Earth की atmosphere की या हमारी ज़मीन की atmosphere की change होती है up to a large height, up to a certain height. ये इनका आपस में क्या relation है और कैसे एक quantity के change होने से बाकी quantities change होती हैं. ये सिंपली एक स्टैंडर्ड के थ्रू मेजर की जाती है और एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है इनके लिए, और जिनको हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर का कहते हैं. और दिस इज अ हाइपोथेटिकल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी दैट बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट इज टेकन टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर पर्पज ऑफ प्रेशर, altimeter, calibrations, aircraft performance, calculations, aircraft and missile design, ballistic tables, etc. Now, before कि मैं आपको थोड़ा सी questions की तरफ लेके जाऊँ, you should go for the some of the definitions which deals with the geometric altitude. So, altitude measured from the sea level is known as the geometric altitude, whereas the altitude measured from the center of the earth is absolute altitude. Now the local acceleration due to gravity depends upon the absolute and geometric altitude through this relation. Also the equation of state relates the pressure, density and temperature, that is जो कि हमने especially solved example के अंदर भी use की. This is through this equation. And now where R is the gas constant and has a specific value for each gas. For air this has 0.286 kilojoules per kg per Kelvin for air. इस equation of state को along with the hydrostatic equation अगर डील करें और उसको इंटीग्रेट करें तो we get some relations जिनको यूज़ करते हुए हम atmospheric pressures डिटरमिन करते हैं. मैं आपको उनकी जर्नल फॉर्म ज़रूर प्रेजेंट करता हूँ. इसकी डेरिवेशन के अंदर आपको नहीं लेके जाना चाहता. इट इज़ से बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर कोर्स, और जो हमारा फोकस है फ्लूइड मैकेनिक्स का उससे थोड़ा सा हट के है. लेकिन दिस इज़ जस्ट बिकॉज टू मेक यू फेमिलियर विद what is the term atmospheric pressure, standard atmosphere, and how you should go for it. Okay, finally दो किस्म के रिलेशंस बनते हैं. एक isothermal relationships making use of the equation of state along with the hydrostatic equation, and इन दोनों को यूज़ करते हुए दो किस्म के स्टेट्स बनते हैं. एक जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो फिर the ratio between pressure at 2 points and density at 2 points is given through these relations for constant T, and where there is a gradient is applied or there is a difference between the temperature at 2 points, then it comes out to be a ratio of pressure at 2 points and density at 2 points comes out to be this, where temperature varies in this manner with altitude. जहाँ पे हाइट के लिहाज से टेम्परेचर वेरी करे तब ये मॉडल्स हम यूज़ करते हैं. R here is the gas constant, A here is known as the lapse rate which is the ratio of dt और dH. So simply अगर आप उसको यूज़ करना चाहें, इन मॉडल्स को यूज़ करना चाहें, किसी एक पॉइंट के ऊपर हाइट आपको नोन हो, टेम्परेचर एट दैट पॉइंट नोन हो, G नॉट which is the absolute gravity आपको नोन हो, तो आप प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. यू कैन सी that in the previous case that gravity varies with the radius from the earth. So जैसे जैसे gravity center of earth से हम दूर होते जाएंगे, gravity change होती जाएगी and depends upon the altitude. So here this G naught is the gravity at the center at the surface of the earth. At sea level, pressure at sea level is computed by, is given by 2.116.2 pound per feet square. Density at sea level is given as 0.002377 slug per feet cube,
and temperature at sea level is 288.16 Kelvin. From sea level, because ये reference quantities हमें known है, so इससे onwards हम जहाँ पे भी pressure, density या temperature find करना चाहें, we can go for it, and this is used to predict the changes in the atmosphere and in the say climate, to predict the rain and forecasting sort of a system. उसके अंदर इसकी utilization बहुत ज़्यादा है. Now the calculated values are available in table as well. जो next table है इसके अंदर मुख्तलिफ values provided हैं कि height के लिहाज से किस तरह ये vary होगा, making use of the relationships which I showed you in the previous slide. Here Z or the height is measured in meters, 500 meter, 0, and then so on. Here is the temperature. जैसे take for instance, if we are at a height of 500 meter, then temperature will be 284.91 Kelvin, and pressure will be 95 into 10 raised 95.48 into 10 raised to power 3 pascals, and density will be 1.1677 kilogram per meter cube. And likewise जैसे जैसे height vary करें, ये table मुख्तलिफ relationships बताता है. You can go for the verification उन relationships के अंदर temperature की, height की and density की value substitute करें, and then check out कि आया कि आपकी value of pressure यही आती है जो इस table के अंदर given है, या there is some difference between your computation and the values given in these tables. Now with this I'll summarize this today's lecture. In today's lecture we went through the physical interpretation of pressure distribution in static fluids, some word problems जो हमने solve की और ज़रा देखा कि कैसे हम hydrostatic equation को use कर सकते हैं. Then we went through the standard atmosphere, उसकी definition, और briefly ज़रा हमने analyze किया कि what standard atmosphere is. And with this I'll take you to today's quote, and it says be consistent. You know, consistency is a thing that matters. आप hard working हैं, that's good. आप intelligent हैं, that's very good. लेकिन you can only reap the goods of these things when you are consistent. ज़िंदगी में सिर्फ मुसलसल चलते रहने का नाम है. So चलें and be consistent with whatever you do. अगर आप उसकी एक बेहतरीन फ़ायदा उठाना चाहते हैं और बेहतरीन आउटकम चाहते हैं, तो बी कंसिस्टेंट विद वट एवर यू डू. अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को बहुत सारी आसानी दे. एंड until our next lecture, it's goodbye from my side. Allah Hafiz.